outfit of the day. I feel, I think I feel, I don't know. Can't say anything right now, but really excited. Let's go. यहाँ हैंगर रखेंगे, सफाई होगी इधर भी, और ये हैंगर इधर रखने है। चल चल, ज़्यादा नौटंकी ना कर। ये चप्पल स्टोर, एक लड़की का स्माइल। ओह माय गॉड, निकल गया। नौटंकी मत कर। चिपकाना पड़ेगा इस पे गोंद लगा के चिपकाना है। आई एम इन माई 2B रूम। पता है मेरे यहाँ पे खून आ रहा था जब मैं फ़ी पेमेंट कर रही थी, और मुझे मेरे बाजू वाले एक लड़के ने बोला। कहाँ पे? मैंने कहा क्या? कहाँ पे? मैंने इसे साफ किया। चल यहाँ पे इस पिंपल, चल फिर। ये सब हटाना है पीछे का। हाय फ्रेंड्स, Two months ago, I was really confused about college and everything, and now that college admission is done, it feels calm. I'm really excited for what is to come next, but I'm also really anxious. But it's with everything that happens. But I'm done with my admission, and I'm now a master's postgraduate student, which sounds insane now that I say it. It feels like I've grown suddenly, and I'm figuring it all out. But now I am a MA comparative literature student and excited for what comes next. So yeah, stay tuned. Or what should I say? हेलीकॉप्टर जा रहे हैं क्या? सो या कल हमने एडमिशन एंड हॉस्टल और कॉलेज का एडमिशन कंप्लीट कर चुका है, सब कुछ हो चुका है, फीस एंड एवरीथिंग, एंड इट वाज अ रियली हैक्टिक डे, बल्कि बहुत ओवरवेलमिंग था। आई फील लाइक हिंदी में मेरे इमोशंस जल्दी इजीली बाहर आते हैं, बट इसलिए मैं ज़्यादा हिंदी अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ शायद, कि पता नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको। बट इट वाज रियली ओवरवेलमिंग। जैसे कि जब एडमिशन के लिए, एक तो न्यू ऐसा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत अंतर होता है, जैसे कि जो पॉलिटिक्स वगैरह है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, वो यहाँ की ज़्यादा है, मतलब यही है। हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं था वो सब। बट ऑल्सो बहुत हेल्पफुल रहे कई लोग। मुझे कल इतने नंबर मिले हैं कि मैं सोच रही हूँ कि किसको कॉल करना है। अब जब सबने बोल दिया कि आप कॉल करो जब भी करना है, ज़रूरत हो जो भी, करना किसे। पर काफ़ी ओवरवेलमिंग था। जैसे ही हम कैब से उतरे तो वैसे ही सब हमें बोल रहे कि आ जाओ एडमिशन। और मैंने कहा ऐसा क्या कर रहे हैं कि एडमिशन नहीं, पता नहीं क्या हो गया। बट इट वॉज ओवरवेलमिंग। और ऊपर से बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही बड़े से हॉल में सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, इफ़ यू आर सिलेक्टेड, एंड इफ़ नॉट देन पीपल वर लीविंग। इट वॉज अ रियली स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्योंकि कोई रो रहा है, कोई वेट कर रहा है अपने नाम के लिए, किसी जो भी, बहुत कुछ। तो इट वॉज अ लॉट, बट इट वॉज रियली न्यू, रियली एक्साइटिंग, रियली enriching experience in the sense that I learned a lot, and yeah, it was a good day overall. And it feels like suddenly in a day the life has changed, but whatever happens, I'm really excited.
है ऑथेंटिक है इंडियन फूड। वो तो चला गया इसी जानबूझ के बुला रही होगी। जानबूझ के थोड़ा सा यारी दोस्ती कर ले। कैसा चल रहा? बस अब तो तेरी उसको सबसे बढ़िया डिशों में उसको साउथ इंडियन अच्छा लगता है। अच्छा सही है खाने में सही है। इसका पसंद वही है। तमिलनाडु वाला भी वो टमाटर का चटनी अरे सॉरी, क्या हो गया बाद में कुछ इसको कैसे खाऊं आंटी, ऐसे कुछ नहीं चटनी के करेगी साथ? हाँ है ना, हो गई ना मन की। कितने दिन में आ जाएगी यार लगभग? आ जाओ इधर आराम से, बस खाओ नहीं, सो महीने में एक बार मेडिटेशन कर लो, घूमो अंदर कोई वेकेशन का मन करेगा मैं यहाँ आ जाऊँ। सही। कहीं मेरी आंटी का 5 स्टार मिल रहा है इधर। जिम भी जाना, हाँ जिम भी है इधर भी। सब कुछ करना है। आंटी अप्पे किसके बनते हैं? सब मिक्स हाँ, सब्जी गोले डालनी गोले। उसमें। वो आप पे वही पूछ रहे हैं ना वही अंजलि? है ना? इसी का आटे में हाँ। प्याज मिर्ची कैरेट भी डाल बीन्स सकता है। हाँ ये सभी ओ हाँ। क्या है वो, किस क्या होता उसका बर्तन भी अलग ही है? होता अलग है। है, मेरे पास है, वो भी बनाते हैं मैं। अचार की वैरायटी दे, जो पसंद आएगा वो पहुंच जाएगा तेरे लिए। हाँ मैं वो बोल रहे हैं लेके जाओ, अभी खाना उधर ठीक नहीं होगा, ये आम का अचार ये लेके जाओ बोल रहे हैं मैं भी। मेरा भी गया वीडियो है ये, आओ फोटो में लेना। फोटो लेते हैं। नहीं ये अच्छी नहीं आ रही मेरे साथ। 14,000 and 16,000 24 आवर्स के लिए इसमें कमरा। एक कमरा का प्राइस हाँ। 14 to 15,000। 16,000 वाला में पीछे थोड़ा हमारा घर में स्विमिंग पूल है ना, हाँ ऐसे ऐसा और बड़ा रहेगा। स्विमिंग पूल है इस वेकअप सेट का ही है ना वो मसक्कली गाना कि किसी और का? हाँ पर मुझे वो वाला सीन करना है यहाँ पे। क्या मैं दिख रही हूँ? भाई इस वाइट लाइट से तो मेरा नहीं हो पाएगा। हाय वी आर बैक। आज हम हरिद्वार क्यों बोल रही हूँ मैं हैदराबाद को? पता नहीं मैं कितनी बार हैदराबाद को हरिद्वार बोल चुके हैं। मैं बार बार, जैसे मैं वहाँ पे भी बोल रही थी कि हाँ मुझे हरिद्वार जाना है, हाँ मुझे हरिद्वार, अरे हरिद्वार। पर या I just wanted to talk about this whole experience because I really want to. I don't have my mic, it's in the other room, but I really want to talk about the whole experience of college admission. And this is a very informal thing, obviously, right? Hopefully you understand my vibe, but it feels serious. It feels like, as I've said this multiple times, that this feels like a sudden change. It feels magnanimous. It feels like a lot is happening in such a short time. And yeah, it's all true. I'm feeling all the right things, I think. But right now, I feel so much better than I was feeling yesterday. Let me talk about the whole experience. First of all, in one word, I would say overwhelming. It was an overwhelming procedure because we got to the university campus before 9 a.m. Okay, timing for reporting time was 9:15 a.m.
till 9:15, and then admission, attendance, everything would begin. And I cannot tell you that I reached early, and it was overwhelming, as I said. I don't know how to explain it. I don't know if I should talk about it all, but it was overwhelming. And what so happened that there were people there, okay, seniors from different, I don't even know, I did not understand it. So many people tried to tell me, but I still do not get it. But there were multiple seniors who helped with everything, okay, from form to room, hostel, everything. And I'm so glad, like, for their help. But it was really overwhelming. Imagine you're just standing there, not asking any help, yet all the help comes to you unasked. Unasked help is overwhelming. Even asked help is overwhelming because I'm not used to. Okay, let's not talk about this. Let me tell you my experience. So yeah, we got to the campus. It was overwhelming because we got there. We did not even step foot out of the cab, and there were people coming to us. I feel like I should talk in Hindi. I don't know. मैंने अब तक इस कॉलेज में सिर्फ एक इंसान को बताया है कि आई मेक व्लॉग्स, and I already feel really anxious because that means new people will see me with the new videos and my audience is going to kind of shift. But yeah, so it was overwhelming, okay. But yeah, we went inside. The attendance happened in an hour. I think it finished in an hour. I don't even know the time exactly. But then again, overwhelming procedure of the calling out of names of students who were selected in the number of seats that there were. After attendance, we were sitting in this huge hall where all the courses were sitting together, like MA English, MA Comparative Literature, MA English Studies, MA Telugu, MA Hindi, MA Philosophy, Psychology. और क्या होता है? Yeah, okay. Then one by one, each course has some limited seats. So each name was being called out. There was a screen where we could see which student is getting selected, in which category, how many marks that person has. Everything is visible there. It's all transparent. It's all easy to track everything, okay. I like that part, that it was really transparent, but also it was again overwhelming because you can see your name there. Imagine the person who can see that they are just a step away from getting selected. Like, imagine not getting selected even after, you know, coming to the campus from your home state, home city, whatever, and getting there and realizing that you're not selected because there were only these many seats. Realizing that only 1 or 2 marks, or sometimes not even marks, there were students who had same marks in CUET, so their degree ka percentage decided if they will get selected or not. And it happened in 2 courses, 2 times. I mean, more than 2, I think. But imagine being in that position that you could have been there, but you are not because you did not get good percentage in your college degree, which is insane. It was really overwhelming in that sense, and I was really anxious. Of course, my first priority was MA English, but did I say yet that I'm a postgraduate student now? I think I told you in morning, right? So yeah, I am a student of comparative literature now, and this sounds so fun, right? I was really confused between MA English and comparative literature. Did I talk about this before? I think I did, but with my friend. And I was constantly talking about how I'm really confused because I'm really interested in comparative literature. Also, I checked the syllabus of comparative literature not just for
University of Hyderabad, but for many universities. And the syllabus is just so vast, so interesting, because MA English ka, I checked the syllabus and there are courses in all the universities which I have done in bachelor's. Like, of course, in master's it will be a different level, but I've done multiple courses like Indian writing in English, British poetry or drama, multiple novels, multiple poems, essays that I have done in my bachelor's. So it did not feel so new or, you know, so compelling. I don't know how to explain it, but when I saw the syllabus of comparative literature, it's just so vast, and I feel like I do not know anything that is in the syllabus. I've not heard of so many authors that there are so many papers and essays in the syllabus, and which is very interesting because of course we have read, you know, multiple essays and stuff, but it's just really interesting. I don't know, for the lack of better word, it's just really interesting. It's very attractive. But yeah, the syllabus is just so interesting. As a student of English, I think, shouldn't I have better words to explain my whole experience? पर एक कहावत नहीं है, एक कोट है कि जैसा आप बोलते हैं वैसा लिखा भी कीजिए, कि जैसा लिखते हैं वैसा बोला, भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर. बट या तो एडमिशन के लिए, अब लेट मी टेल यू द होल प्रोसेस. ओके, इट टुक अस more than 6 hours in the evening at 6 p.m. almost after 6 p.m. But that's when the whole counseling, admission, fee, submission, everything got done. Okay, everything happened in one day, by the way. First we did attendance, then calling out of names of students who were selected in various categories, whatever number of seats you can, everything is available online. Then we went to this room for document verification. After that we went to this other room which was IT cell lab for fee payment. After fee payment we have to go to another room. This is third room. Okay, we have to sit there, wait for admit card and fee slip is generated, and then fee slip is generated. Afterwards we get our admit card, and then we have to go to apply for hostel if you want to apply for hostel. So I did. Then again, like in each room you have to sit for 30 or more minutes, hours sometimes, because I cannot tell you. But something really interesting happened with me, but let's not talk about it. So it so happened that it was a long freaking procedure, and I thought people are joking when they said that it takes the whole day, but it did. And then we went, then hostel. After applying for hostel, you have to pay for hostel. Then you are allocated then you get what do you get? Yeah, after applying for hostel, you get your hostel name, number, room number, and then you can go to your room. That's it. That's the process. Also, you have to submit your admit card to your department. That's when the admission gets completed. But I have not yet submitted the admit card. I'll go tomorrow, and tomorrow I'll be in my room. I have also made friends. So many people have shared their numbers with me, and yeah, that was overwhelming too, because I do not remember so many names, but I do remember some people. Also, there were people who remembered my name. Like, I told them in the morning, but after admission there were people calling out my name, and I was just really
proud of them because it's hard. I know so many people forget my name, but they remembered, and that shows that they care about me. Okay, but it was a very overwhelming day, and after I went to my hostel and my room, I realized that this is definitely not what I was expecting. Even the washroom, even the hostel. But we'll see what to do about that. I think I did show you some part of my room. So I have to go tomorrow, clean it all up, settle down in that room. We cannot change our room for one semester, so I have to figure out some way to deal with whatever is that hostel in that room. And also washrooms. It's tough, it's going to be tough, but I'm tougher. I'm just really anxious about that part. But I made this friend, and what was I saying? ऑल्सो मेरे कई दोस्तों सिर्फ मम्मी के कारण बने, पता है, क्योंकि मम्मी उनके पेरेंट्स से बात कर रही थी और उसके कारण उनके बच्चों से हमारी बात हो गई। तो ऐसे मेरी एक दोस्त बनी, एंड हम लोग आज घूमने भी गए, तो वहाँ पे मुझे हम उसी दोस्त के साथ भी घूमे। व्लॉग में दिख रही है ना शायद कहीं कहीं, क्या मैं व्लॉग डाल रही हूँ वो वाला? आई डोंट नो, मैंने व्लॉग बनाया है, आई डोंट नो बट मैं कर क्या रही हूँ? I've made videos, but I do not make videos for the purpose of posting them. Do you understand? That this video that I'm making is not just for the purpose of vlog, but this is my memory. And you're lucky that you're getting to be a part of it. Like, you're getting to see it. You don't have to complain. Like, sure, you can give me advices like how to do it better, but that is not really my purpose. Okay? Like freedom of choice for both of us. Anyway, so yesterday was tough, but yesterday has always been tougher. Yesterday has always been tough. Tomorrow is going to be better, right? Anyway, क्या कर रही हूँ मैं? But to be honest, I felt cheated after seeing that hostel. But I was talking to this friend of mine, and we were talking about how there were so many people who went with home, you know. They did not get selected. They came to the university. The person, I don't know, but some teacher, some staff member, the person said that 2,000 people applied for various courses, and out of those 2,000, around 1,000 something people have come for admission counseling, and only 300, around 300 will get selected. So imagine going back home without getting a seat, you know, spending money. Also, मैंने तो पूरा पैकिंग वैकिंग तैयारी सब करी आया था, तो I was expecting to get a seat. Obviously, that is why I did that. But when I did not get a seat in MA, I was just really anxious. I could not imagine. I still don't want to. I don't want to imagine. But it was really stressful when you can see there that your name is sure there on the list, but you're not in the selected people. Like, you have come here for admission, but you will not get it because there are limited seats and limited number of people will get admission. It was overwhelming, to say the least. As I said, thousands of times now. So yeah, it was stressful. And now that I've got a seat, I'm stressed about the hostel situation. But, you know, privilege. For anything good, there is something bad. Like, everything has two sides. So while if I wouldn't have get, oh shit,
दोस्तों हमको ये कार्ड यूज करना नहीं आ रहा है, मम्मी बाहर गई है। ये सेंसर बंद है। रहने दे, अभी खुल रहा है। हो गया फिर अब। नहीं लगा था मैं, हमारा दो लगा है। बढ़िया शॉपिंग बढ़िया शॉपिंग। We are in DMart. Were in actually. ओलान पड़ान की बढ़िया बात है, ठीक है। शेषों से दुई बचोलों से दुई दादी ये तो जैसा किया सिर्फ किया। वाह, आप तो बहुत ही गजब। इन्हें हाथ काम हो गया। अरे निकाल यार। तो इन धनिया लागूगा तो तुझे लोग खाएंगे। उसने बोला ये तेरा है, वो उसका है, कि ये मैं यहाँ टांगती हूँ तो यहाँ टांग लेना। अच्छा और ये बल मैंने कहा आपने बनाया, पर नहीं जो पहले थी उसी का है। रहने दे, ये तो ठीक है लगा ना क्या तो नहीं लग रहा है यार, गंदा है। और ये तो रहने दे जो ये पे और दीवार पे चिपका ये कपड़ ये नहीं बचा लगा तो शिव तो नहीं लगा शिव खराब नहीं लगा क्या जो कील तो कैसी जो ये पास चील ठीक है, पर वो कागज मुझे नहीं पसंद। अच्छा उसकी जगह वॉलपेपर साफ रखिएगा। वॉलपेपर उतना होना भी चाहिए है ना। दिस इज टफ। यू आर 99 ये सामान बाहर निकालती हूँ। हम फ्री हो गए। अब हम जो है वर्ती 2 साल बाद मास्टर्स कराना। Hi friends, welcome from मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा गैप नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आई हैव अ रूममेट एंड आई हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट हर, ओके। बट मैंने ये थोड़ा बहुत वॉलपेपर लगाने की कोशिश करी एंड इट्स लॉट बेटर नाउ। कल मेरे को देख के ऐसा हुआ कि ये क्या है, पर इट्स मच बेटर नाउ। एंड बारिश हो रही है, मम्मी जा चुकी है। पहले मुझे हो रहा था कि यार मुझे बहुत बुरा लगेगा, लग भी रहा है, बट उतना नहीं, मतलब हो जाएगा यार, हो जाएगा ऐसा लग रहा है। कल तक मुझे लग रहा था यार पता नहीं क्या होगा मेरा उस कमरे में, पर इट्स गुड, इट्स ओके, इट्स फाइन, मैनेजेबल, लिवेबल, सर्वाइवेबल। आई कैन सर्वाइव दिस, सर्वाइवेबल, या वी गॉट दिस। आई डू द रेस्ट ऑफ द वॉलपेपर लेटर क्योंकि ये ख़त्म हो गया था जितना 10 मीटर था ये बल्ब। 10 मीटर में मुझे लगा था हो जाएगा। Apparently my maths is not so great, but yeah, I feel so much better now. Feel so relaxed. Not really, but this is my bed and
आई एम थिंकिंग ऑफ स्लीपिंग नाउ. बाहर बारिश हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है. मैंने बाहर धोए नहाया. आई फील फ्रेश, आई फील क्लीन in this clean room, and just very excited for everything. I'm going to finish Godan in these couple days because I am reading it. I was reading it on the train as well. Very excited, really excited. मुझे बहुत भूख लग रही है क्योंकि मैंने सुबह खाया था खाना जब हम कविता आंटी के यहाँ से आए थे. एंड देन हम सोचा था हम यहाँ आके खा लेंगे लाइक शॉपिंग के अराउंड लंच. बट देन लंच बीत गया टाइम एंड फिर शॉपिंग, फिर क्लीनिंग एंड देन अगेन शॉपिंग फॉर बेड मैट्रेस, यू नो. तो इट वाज अ लॉट, इट वाज अ लॉट, बट it was all worth it. I feel so much better now. Going to read now. Actually, I'll call my siblings because they are home. मम्मी जा चुकी है, मम्मी की ट्रेन है, पहुंचने वाली होगी रेलवे स्टेशन. And it was a good day. It was a good day. Whatever ends well, all's well that ends well. And then I'm going to sleep because I'm really tired. I'm so freaking tired. कल मुझे नींद नहीं आई है इस सोच में कि मेरी मम्मी जा रही है और मैंने यहाँ रहना है, वो भी जीवन में पहली बार. दैट टू विद द रूममेट, क्योंकि यू नो आपको उसके इंसान के हिसाब से भी एडजस्ट करना होगा. होपफुली कुछ ऐसा नहीं होगा टफ. एंड शी एक्चुअली सीम्स रियली स्वीट. तो आई एम जस्ट होपिंग दैट एवरीथिंग गोज़ वेल. या गुड नाइट. See you soon because we have a lot to do. And then अलमारी में मैंने अभी ऐसे ही कर दिया है सब कुछ, but we'll figure it all out. And tomorrow we'll try mess food for the first time. I did check mess today. Mess is in the ground floor of the hostel that I'm staying in, so I think it's a good thing. जैसे कि मेरे कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने बोला उनका हॉस्टल थोड़ा बड़ा है, रूम मेरा छोटा है उनके हिसाब से, तो it's okay. मुझे हॉस्टल के लिए लाइक एज एन सीढ़ियों से नीचे जाना है और हॉस्टल इज़ राइट देयर. हॉस्टल क्या होता है वो, मेस इज़ राइट देयर, और वाटर कूलर भी इज़ राइट देयर, वॉशरूम इज़ राइट देयर, एंड टेरेस इज़ ऑल्सो रियली क्लोज. तो बहुत ही अच्छा है. उस टेरेस पे हम बैडमिंटन खेल सकते हैं. तो मैंने सोच लिया कि जब मेरी बहनियाँ आएगी या कोई आएगा तो बैडमिंटन खेलेंगे हम उस छत पे. बैडमिंटन लाना पड़ेगा. आई डोंट नो, मैंने उस छत पे बैठ के बस बैडमिंटन सोचा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खेल रही थी इन छुट्टियों में. इट वॉज अ फन टाइम. इन छुट्टियों में मैंने बहुत मज़े किए. लाइक मैंने इंटर्नशिप भी करी, बट मैंने बैडमिंटन खेला, रोज़ किताबें पढ़ी, बहुत कुछ किया. बढ़िया. आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ. गुड नाइट. आई एम सपोज टू बी एडिटिंग एंड आई जस्ट फील सो हेल्पलेस अबाउट द दिल्ली प्रोटेस्ट एंड एज वेल एज ऋषिकेश 7 मोड़ project. It's just shameful. It's just a lot to process. And there's this interview of Arundhati Roy, 2022 interview, where she says that there's a lot of information. This is the time when we have, you know, access to so much information. We don't need to know everything about everything. And it keeps on ringing in my ears, in my head, that there's too much to process. This new life that I'm leading right now, but also everything that is going on in the world. And it's just truly sad. And I feel really helpless. It's I think if you're not radical, if these things do not radicalize you, I don't know what will. Nothing can make you as radical as everything that you can see around yourself. And it's just so sad.